Good afternoon. This is All India Radio. I'm Arjun Chaudhary and with me is Prashant Kumar Sinha with the Midday News. And let's begin the news with the top headlines. Prime Minister Narendra Modi says India leads the world in startups, says unicorns also making big progress. In the 83rd episode of Man Ki Baat, Prime Minister talks about Azadi Ka Amrit Mahotsav, nature conservation, pays tribute to the armed forces and B.R. Ambedkar. Prime Minister speaks about the impact of various government schemes including Ayushman Bharat, talks to beneficiaries of Centre's Ayushman Bharat Health Scheme. Mr. Modi says purpose of his life is to serve people. Prime Minister urges people not to lower their guard against COVID-19 as it is not over yet. Government holds all-party meeting in Parliament House ahead of the winter session beginning tomorrow. BJP wins majority in Agartala Municipal Corporation elections in Tripura. President Ramnath Kovind graces a convocation ceremony of Patanjali University in Haridwar. International Film Festival of India comes to a close in Goa today. And in cricket, India takes a 200-run lead in the second innings against New Zealand in the Kanpur Test match. In our top story, as India created history by administering over 100 crore vaccine doses against COVID-19, All India Radio salutes all the doctors, nurses, other frontline workers and all those who got vaccinated and made this possible. Even though the country has achieved this feat, we caution our listeners that the battle against COVID is not yet over. We appeal to our listeners to get fully vaccinated at the earliest and also help others get vaccinated. Please follow these three simple steps. Wear a face mask, maintain 2 gaz ki duri for social distancing, and focus on hand and face hygiene. For any COVID-related information and guidance, contact the national helpline numbers 011-23978046 and 1075. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said the resonance of Amrit Mahotsav has spread throughout the country, from panchayats to the parliament. Addressing the nation through his Man Ki Baat program on All India Radio, Mr. Modi expressed his happiness that programs in connection with the Mahotsav are going on successfully. He said that keeping in view the contribution of tribal communities in attaining freedom, the country has also celebrated the Janjati Gaurav Saptah. और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। हमारे देश का महारत्न ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है। Prime Minister mentioned how in the Andaman and Nicobar Islands, people from tribal communities such as Jarwa and Ong vibrantly displayed their culture. He noted how miniature writer Ram Kumar Joshi from Una in Himachal Pradesh has drawn sketches and postage stamps. He also praised the persons from Katni, Madhya Pradesh who conveyed information on a memorable Dastangoi, a storytelling program. Through that, memories of the indomitable courage and sacrifice of Rani Durgavati have been rekindled. Mr. Modi also said that a 3-day festival was organized in Kashi in honor of illustrious luminaries such as Goswami Tulsidas, Sant Kabir, Sant Ravidas, Bharatendu Harishchandra, Munshi Premchand and Jai Shankar Prasad. Prime Minister referred to the 3 competitions he had spoken of in the last Man Ki Baat. One was on writing patriotic songs, one on drawing rangolis on events connected with patriotic fervor and the freedom movement, and one on scripting lullabies that nurture dreams of a grand India in the minds of children. आपको ध्यान होगा, मन की बात के पिछले एपिसोड्स के दौरान मैंने 3 प्रतियोगिताओं का उल्लेख किया था, कंपटीशन की बात कही थी। एक, देशभक्ति के गीत लिखना, देशभक्ति से जुड़ी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए।
मुझे आशा है इन प्रतियोगिताओं के लिए भी आप जरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे, योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे। मुझे आशा है बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कार्यक्रम को आप जरूर आगे बढ़ाएंगे। Mr. Modi said India is leading in the world of startups today, and startups are getting record investment year after year. He added that the sector is progressing very fast and its reach has increased even in small towns of the country. आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। The Prime Minister said the Indian youth is also contributing to the solution of global problems through startups. He spoke to Mayur Patel, who along with his friends have tried to put forward a solution to the problem of pollution. साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों, स्टार्टअप की सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। Mr. Modi said Navy Day and Armed Forces Flag Day are celebrated in December. He added that on the 16th of December, the country will also celebrate the Golden Jubilee of the 1971 war. He remembered the country's armed forces and brave hearts. इसी महीने नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है। हम सबको मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूं, हमारे वीरों का स्मरण करता हूं और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूं। The Prime Minister talked about the spiritual importance of Vrindavan. He said Vrindavan is a tangible manifestation of God's love and it has been attracting people from all over the world. ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। हमारे संतों ने भी कहा है, यह आशा धरी चित्त में, यह आशा धरी चित्त में कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग गौ, वृंदावन सुख रंग गौ, काहू न पायो और। यानी वृंदावन की महिमा हम सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहते जरूर हैं, लेकिन वृंदावन का जो सुख है, यहाँ का जो रस है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। वो तो असीम है। तभी तो वृंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी। Mr. Modi also pointed out that Australia shares a bond with Jhansi, Bundelkhand. When the Queen of Jhansi, Rani Lakshmibai, was fighting a legal battle against the East India Company, her lawyer was originally a resident of Australia named John Lang. The Prime Minister said that valor can be shown by anyone. He mentioned a letter he received from Jyotsna, who wrote to him about a traditional river in Jalaun, which is the Noon River. Noon used to be the main source of water for farmers, but gradually reached the verge of extinction. Mr. Modi said the people of Jalaun took an initiative and formed a committee in March of this year. Thousands of villagers and local people spontaneously volunteered, and in a very short time and at a very low cost,
the river came back to life again. The Prime Minister stressed on how everything becomes possible when Sabka Prayas is involved. Mr. Modi stated that when nature is conserved, nature in return gives protection and security. He cited the example of Thoothukudi district of Tamil Nadu, where many small islands and islets were increasingly in danger of getting submerged in the sea. The people and the experts found the mitigation from this natural disaster through nature itself. तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। Lauding the initiative, the Prime Minister said nature poses a threat only when her balance is disturbed. He also gave the example of Meghalaya, where river water is so crystal clear that boats appear to float on the river. प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। इसी में हम सबका हित है, जग का हित है। The Prime Minister spoke to two persons who got their treatment done with the help of Ayushman Bharat scheme. Rajesh Kumar Prajapati had an ailment of the heart. He recounted how he came to learn about the scheme and how it helped minimize his expenses. सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या। देखिए, गरीबों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना ये अपने आप में जी सर बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन देखिए राजेश जी, आप हमारा एक काम कीजिए। करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर। देखिए, होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है। आप एक जिम्मेवारी निभाइए। ऐसे जितने गरीब परिवार हैं आपके आसपास, उनको अपनी ये कैसे आपको लाभ हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे सर। और उनको कहिए कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा लें, ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए और आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे, ये तो ठीक नहीं है। अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करे, तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। और गरीब को तो क्या होता है, जैसे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो कितने महीने तक आप काम ही नहीं कर पाए होंगे। अब तो 10 कदम नहीं चल पाते, जीना नहीं चल पाते थे सर। बस तो आप प्रदेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप ये आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं, वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं। देखिए, आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए भाई, एक राजेश जी की तबीयत तो ठीक हुई, लेकिन राजेश जी ने सैकड़ों लोगों की तबीयत ठीक करवा दी। ये आयुष्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, सामान्य परिवारों के लिए है। तो घर घर इस बात को पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल पहुंचाएंगे सर। In his conversation with the other beneficiary, Sukh Devi, who had a knee problem, the Prime Minister said Ayushman Bharat scheme envisages to give the gift of good health to everyone. The Prime Minister said the death anniversary of Baba Saheb Ambedkar will be observed on the 6th of December. He said Baba Saheb had devoted his entire life in rendering his duties for the country and for society.
बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समर्पित किया था। हम देशवासी ये कभी न भूलें कि हमारे संविधान की मूल भावना, हमारा संविधान हम सभी देशवासियों से अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि अमृत महोत्सव में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। यही बाबा साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, अब हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर रहे हैं। स्वाभाविक है अगली मन की बात 2021 की, इस वर्ष की आखिरी मन की बात होगी। 2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और वहां आपसे ढेर सारे सुझावों की अपेक्षा करता ही रहता हूं, करता रहूंगा। The Prime Minister cautioned people that COVID has not gone yet. He said it is the responsibility of everyone to take all precautions to curb the spread of COVID. You are listening to the Midday News on All India Radio. A reminder of the headlines before we move on. Prime Minister Narendra Modi says India leads the world in startups, says unicorns are also making big progress. In the 83rd episode of Man Ki Baat, Prime Minister talks about Azadi Ka Amrit Mahotsav, nature conservation, pays tribute to armed forces and B.R. Ambedkar. Prime Minister speaks about the impact of various government schemes including Ayushman Bharat, talks to beneficiaries of Centre's Ayushman Bharat Health Scheme. Mr. Modi says purpose of his life is to serve people. Prime Minister urges people not to lower their guard against COVID-19 as it is not yet over. Government holds all-party meeting in Parliament House ahead of the winter session beginning tomorrow. BJP wins majority in Agartala Municipal Corporation elections in Tripura. President Ramnath Kovind graces the convocation ceremony of Patanjali University in Haridwar. International Film Festival of India comes to close in Goa today. And in cricket, India takes a 216-run lead in second innings against New Zealand in the Kanpur Test. For quick news updates round the clock, follow us on our Twitter handle @AIR News Alerts. आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। Welcome back to the Midday News. All-party meeting convened by the government at the Parliament House ahead of the commencement of the winter session tomorrow has concluded. Talking to the media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi said opposition parties have put forth their suggestions in the meet. माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नजर में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। BJP will hold its parliamentary executive meeting later in the day. The party has issued a whip to its Lok Sabha MPs to be present in the House tomorrow. The Congress has also issued the whip to its MPs to be present in the House tomorrow. Our correspondent reports on the first day of the session tomorrow, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar will introduce the Farm Laws Repeal Bill 2021 in the Lok Sabha. On the eve of the session, News Services Division of All India Radio will bring you two special discussion programs, Issues Before Parliament in English and Sansad Ke Samaksh Midday in Hindi tonight. Issues Before Parliament program can be heard on the FM Rainbow and Rajdhani channels from 9:30 p.m. And here is also an important announcement. Today's evening news will start at 8:38 p.m. instead of 8:30 p.m. In more news, counting of votes for over 222 seats in the Agartala Municipal Corporation and other civic bodies in Tripura is underway. Out of the 51 wards under the Agartala Municipal Corporation, results of 40 wards has been declared and the BJP has won all 40 wards.
The counting is underway at 13 counting centers across the state. A total of 334 seats, including Agartala Municipal Corporation, 51 wards, 13 municipal councils and 6 Nagar Panchayats are up for grabs. The ruling BJP has won 112 seats spread across 20 urban bodies uncontested. President Ramnath Kovind has said that Patanjali University is working towards the goal of making India a Vishwaguru by combining Indian tradition with modern science, which has been set in the new education policy. He was addressing the convocation ceremony of Patanjali University in Haridwar today. आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। आपके विश्वविद्यालय के कुल गीत में इस शिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान के रूप में किया गया है, जो सर्वथा सार्थक। परंपरा व आधुनिकता के संगम के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। And now let's listen to our special program Azadi Ka Safar, highlighting the importance of today during the freedom struggle. आजादी का अमृत महोत्सव। Azadi Ka Safar with AIR News. Birth of a Nation. India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. AIR News brings you a glimpse of this struggle every day. November 28, 1890. The country lost a great social activist, thinker, anti-caste social reformer and writer from Maharashtra who left an indelible mark on the times by his great works during British India rule. He was Jyotirao Govindrao Phule. Popularly known as Jyotiba Phule, he was bestowed with the honorific Mahatma title by well-known social activist Vithalrao Krishnaji Vandekar in 1888. Phule and his wife Savitribai Phule were pioneers of women's education in India. Jyotirao Govindrao Phule was born in Pune in 1827 in a so-called lower caste community. As a young child, Jyotirao was withdrawn from school and he joined the menfolk of his family at work both in the shop and the farm. However, an elderly Christian friend recognized Phule's intelligence and persuaded Phule's father to allow him to attend the local Scottish Mission High School. Phule completed his English schooling in 1847. The turning point in his life was in 1848 when he attended the wedding of a so-called higher caste friend. Phule participated in the marriage procession but was later rebuked and insulted by his friend's parents for doing that. This incident profoundly affected Phule on the injustice of the caste system. Later, at the age of 21, Phule visited a girls' school in Ahmednagar run by Christian missionaries. He read Thomas Paine's book Rights of Man and developed a keen sense of social justice. He realized that so-called lower castes and women were at a disadvantage in Indian society and also that education of these sections was vital to their emancipation. Phule first taught reading and writing to his wife Savitribai, and then the couple started the first indigenously run school for girls in Pune in 1848. The so-called upper castes of Pune did not approve of his work, but many Indians and Europeans helped him generously. Conservatives in Pune also forced his own family and community to ostracize him. During this period, their friend Usman Sheikh and his sister Fatima Sheikh provided them with a roof over their heads. They also helped them start a school on their premises. Later, the Phules started schools for children from the so-called lower castes.
In 1852, there were 3 Phule schools in operation and 273 girls were pursuing education in these schools. The plight of women and widows in the society also moved Phule. In those days, widows were treated badly, and even their shadows were considered to be inauspicious. They were made to attach a broom to their backs to wipe the path on which they had travelled. He championed widow remarriage and started a home for pregnant widows to give birth in a safe and secure place. In 1863, Phule established an orphanage in an attempt to reduce the rate of infanticide. Phule daringly got pamphlets stuck around Pune, advertising in the following words: "Widows, come here and deliver your baby safely and secretly. It is up to your discretion whether you want to keep the baby in the center or take it with you. This orphanage will take care of the children left behind." The Phule couple ran the Infanticide Prevention Center till the mid-1880s. On the 24th of September 1873, Phule formed Satyashodhak Samaj to focus on rights of depressed classes and women. We pay tributes to the great social reformer Mahatma Jyotiba Phule on his death anniversary. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News. See you in the next episode tomorrow. Best wishes to all consumers for Azadi Ka Amrit Mahotsav. Hallmark ensures purity of gold. Always purchase hallmarked gold jewelry. For any consumer-related complaints, please contact National Consumer Helpline toll-free number 14404, issued in public interest by the Department of Consumer Affairs, Government of India. Jago Grahak Jago. The annual International Film Festival of India, IFFI, comes to an end today. The star-studded musical extravaganza heralded 9 days of films and events in Goa. Films in various categories were showcased and numerous artists were honoured. Our correspondent reports that the festival will conclude with Asghar Farhadi's film, A Hero. Over 121 crore 94 lakh COVID vaccine doses have been administered in the country so far under the nationwide vaccination drive. Union Health Ministry said more than 82 lakh 86,000 vaccine doses were administered in the previous 24 hours. During the same period, 8,774 new COVID-19 cases were reported and 9,481 COVID patients recovered. The national recovery rate stands at 98.34%. In the Kanpur cricket test, India were 167 for 7 wickets in their second innings at tea on day 4. New Zealand bowlers have been at their best since morning as they removed 5 Indian batters on the day. Kylie Jamieson and Tim Southey have picked 2 wickets each, while Ajaz Patel got 1. For India, Shreyas Iyer, who scored an impressive ton in the first innings, scored a responsible knock of 65 runs. With a lead of 49 runs in the first innings, India is now altogether leading in 216 runs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India leads the world in startups, says unicorns are also making big progress. In the 83rd episode of Man Ki Baat, Prime Minister talks about Azadi Ka Amrit Mahotsav, nature conservation, pays tribute to the armed forces and B.R. Ambedkar. Prime Minister speaks about the impact of various government schemes, including Ayushman Bharat, talks to beneficiaries of Centre's Ayushman Bharat Health Scheme. Mr. Modi says, purpose of his life is to serve people. Prime Minister urges people not to lower their guard against COVID-19 as it is not yet over. Government holds all-party meeting in Parliament House ahead of the winter session beginning tomorrow. BJP wins majority in Agartala Municipal Corporation elections in Tripura. President Ramnath Kovind graces the convocation ceremony of Patanjali University in Haridwar. International Film Festival of India comes to a close in Goa today. And in cricket,
India takes a 216-run lead in the second innings against New Zealand in the Kanpur Test. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the Midday News.